ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन 41 ਦੇ ਅੰਦਰ cash flow from the following balance sheet of XYZ company limited as at 31st March 21 prepare a cash flow statement। पहली चीज ओपनिंग क्लोजिंग दोस्तों सीधा उल्टा उल्टा। शेयर कैपिटल गिवन है 4,50,000 टू 6 लाख। नीचे जाके चेक करो कोई पॉइंट गिवन है रिलेटेड। नो। मतलब सिंपल इशू है। इशू कितने जाऊंगा? फाइनेंसिंग पॉजिटिव, यस और नो? इशू ऑफ शेयर कैपिटल, देयर वाज अ पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट रिलेटिंग टू, हाँ इतने आगे क्लियर होएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो मींस द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। सो कितना आ गया? 1,65,000। ठीक है। द सेकेंड वन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जनरल रिजर्व बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं करना। कैपिटल रिजर्व इंक्रीज कर रहा है। उन तक के सारे क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व वाज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। बट आज के लिखा प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना प्रॉफिट लिखा? 1,000। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितनी हो रही? 50,000। 50,000 ਤੇ रिडेम्पशन की थी दूसरी डिबेंचर्स और उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? प्रॉफिट। मींस ਤੁਸੀਂ पेमेंट कितनी ਕੀਤੀ होगी? 50,000 ਦੇ डिबेंचर्स रिडीम होए, 1,000 ਦਾ फायदा हो गया, मींस पेमेंट कितनी ਕੀਤੀ होगी? रिडेम्पशन कितने ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚਾ? फेस वैल्यू 50,000। स्टिल ਤੁਹਾਨੂੰ 1,000 ਦਾ फायदा ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ? फायदा ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? घट पेमेंट मींस 49,000 पे कितना होगा? तो 1,000 इज द कैपिटल रिजर्व। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ प्रॉफिट ਜਿਹੜਾ 1,000 ਦਾ ਇਹਦਾ P&L ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ बिकॉज इट वेंट टू कैपिटल रिजर्व। ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम वी हैव डिस्कस्ड। एसओपीएल ਦਾ इंक्रीज कितने आऊगा? ऑपरेटिंग ਦੀ स्टार्टिंग। डिबेंचर्स ਦੀ रिडेम्पशन कितने आओगे? फाइनेंसिंग नेगेटिव। एंड 8% ਲਈ we need to check कि डिबेंचर्स कद रिडीम हुए। कहते they were redeemed on 31st March 21 means opening date या closing date? Closing date। Last day redemption हुई means debenture interest 8% will be calculated on the opening balance for the whole year 2,50,000 provided as well as paid। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर TSEL चार्ज होगा ट्रेड पेबल्स। प्रोविजन फॉर टैक्स द अकाउंट यू हैव डन। ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 50,000, नो एडजस्टमेंट और गिवन समथिंग, गिवन टैक्स पेड, so balancing figure will be tax provided। ठीक है। उस तो बाद proposed dividend is given how much? 45,000। ओपनिंग यूज कर दे और उन्होंने 10 भी देता, दोबारा भी क्लियर करता कि 45,000 पेड है, तो यू विल से पेड एज वेल एज प्रोवाइडेड 45,000। ओके। आफ्टर दैट लैंड अकाउंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, सिंपल परचेज, नेगेटिव इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन प्लांट एंड मशीनरी एंड ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ गिवन है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो दो अकाउंट बनोगे, ਇਹਦੇ अकाउंट्स नाल नाल बनाओ। तो फर्स्ट लेजर विल बी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड द सेकंड लेजर विल बी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट। Accounts provision for tax, then two plant and machinery and cumulative depreciation, then one account you can show for the capital reserve special। It's also there, no? Investments account purchase ही आनी है, बड़ी बड़ी गल। We can make for capital reserve as well as for debentures।
because capital reserve links to debentures. Na? So tell me, what's the opening balance of plant and machinery? 6 lakhs. So two balance brought down 6 lakh. Buy balance carried down 7 lakh 25,000. In the depreciation account, buy balance brought down 1 lakh 20,000 and two balance carried down 1 lakh 45,000. Now, what's the adjustment? Plant costing rupees 40,000 was sold for 15,000, and then on that plant accumulated depreciation was 20. Means WDV was 20. So we can make a note. Cost was 40,000. Accumulated depreciation was 20,000. The written down value was 20,000, and it was sold for 15,000. Means there was a loss of 5,000. So what will we show here? Buy cash hyphen sale 15,000. Buy P&L hyphen loss 5,000. 20,000 की किकली भी आएगी. That is cross entry for the cancellation of depreciation. Buy accumulated depreciation account 20,000, and the accumulated depreciation will write to plant and machinery 20,000. Then they are saying loss on sale of plant was charged to SOPL, statement of P&L. Yes, we also transfer to the P&L. Balancing figure. Here it will be by P&L hyphen depreciation provided. Balancing figure 45,000 and total will be 1,65,000, double underline. This side the total will be 7,65,000, 7,65,000 and 1,65,000 to cash hyphen purchases. Balancing. Any doubts? Sale will go to investing activities as a positive figure. Loss will go to operating activities as a positive figure. Purchases will go to investing activities as a negative figure. And depreciation provided will go to operating activities as a positive figure. Yes or no? So we'll also think of the journal entries for redemption of debentures. Okay? Redemption of debentures. Ritika, किन्ने दी redemption हुई बच्चा? 50,000. So what was the name of the debentures? 8%. So normal देखो की हुंदा. Normally we write 8% debentures account debit 50,000 to debenture holders account 50,000 ना, and debenture holders account debit to bank. इधर ही करते सी 50,000, but when we were going to pay 50,000, we just paid 49,000, and the 1,000 profit on redemption went to capital reserve. Or you can put a second next entry also. You can write here to profit on redemption of debentures, because question states ना ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ capital reserve कितना transfer है, केड़ी चीज transfer है, profit on redemption of debentures 1,000. Then we can put a third entry, profit on redemption of debentures debit to capital reserve. Any doubt?
Now you can tell me कि कैश आउटफ्लो कितना होया 49,000। तो रिडेम्पशन दे अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना लिखोगे 49,000। एंड कैपिटल रिजर्व ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਪੀਐਨਐਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਪੀਐਨਐਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਓਪੀਐਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੀ ਆਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੂ ਪੀਐਨਐਲ, टू पीएनएल वाली चीज ऑपरेटिंग माइनस हो because this profit was not relating to any operating activity। डेली का हमता नहीं है ना कुछ, ठीक है ना। दिस प्रॉफिट रिलेट्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यस और नो। दैट्स व्हाई अगर पीएनएल से जानता था माइनस करना सी, बट इट ओनली वेंट टू कैपिटल रिजर्व। तो तीन जर्नल्स में नाल नोट कर लो। एंड क्वेश्चन आई गेस एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। क्वेश्चन से देख लो इस तो बाद व्हाट्स लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड, एनीथिंग। देखो redemption we have discussed 49,000, dividend we have discussed 45,000, interest we have discussed ki 8% on 2,50,000 it will be paid, issue of shares at a premium we have discussed, financing done for investing, sale of plants, purchase of plant, purchase of land we have discussed। investing activity के अंदर investments की हो रहा है देखो purchase, this will also be put in as a negative figure, so investing is also done। ऑपरेटिंग चेक करो कि डिस्कस कर लिया कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसओपीएल द डिफरेंस, टैक्स प्रोवाइडेड, डिविडेंड प्रोवाइडेड, यस वी हैव डिस्कस्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट वी हैव डिस्कस्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वी हैव डिस्कस्ड, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड डिस्कस्ड, CACL very easy, and income tax paid, yes, simply everything we have discussed, and operating answer is also there, yes or no। तो वाइंड अप कर दो क्वेश्चन। Similar question देखो अगला illustration 43 we have discussed in fund flow statement also, same dividend वाला final dividend interim dividend देखिए याद होगा। They are saying a company finds on 1st April 2021 that it is short of funds with which to implement its program of expansion। On 31st March 2020 it had a bank balance of 1,80,000। कहते इस साल ਦੀ starting ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ 1,80,000 एंड एंड तक की हो गया नेगेटिव बैलेंस हो गया 68,750। तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ टेंशन की होया कि साडे नाल। So prepare a statement for board of directors to show how the overdraft of 68,750 has arisen। Following figures ਤੁਹਾਨੂੰ given a balance sheet the opening and closing। Profit for the year ended was given before charging depreciation and tax 2,40,000। 5,000 shares were issued on 31st March 21, means on the closing date at a premium of ₹5 per share। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, बट इस लाइन के थ्रू पता चला it was issued at a premium। Then 1,37,500 were paid by way of income tax। Dividend was paid as follows: 2020 the final dividend pay कितना 10% less tax at 25% on which capital, on the capital on 31st March 2020, means on the opening capital। और जेड़ा interim dividend है वो कितने पे करोगे 5% free of tax। ये कितने पे करोगे क्लोजिंग वाले में, क्लोजिंग वाली कैपिटल, यस और नो। सो व्हाट विल यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल एट द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, कैन यू टेल मी द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। टू 2020 द फाइनल डिविडेंड कितने लगना रहा दसो 10% डिविडेंड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग वाज 2,50,000। so 2,50,000 into 10%, so it comes out to 25,000। and then they said tax at the rate 25%, that is 6,250। so the balance will be 1,8,750।
Then 2021 the you paid interim dividend. Interim will be paid on the closing capital. How much? 5%. इतने की क्या? Free of tax. 15,000 as it is. Okay. These are dividends. So you will say provided as well as paid. Yes or no? Overall पहले dividend 200 पड़ेगा कितना total? Add them both. So it becomes 33,750. Clear? Yes or no? Then next thing. Profit was given. देखो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करोगे प्रॉफिट ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है एसओपीएल ਦਾ ओपनिंग क्लोजिंग ਤਾਂ गिवन ही नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इट्स बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स मेरे दोस्तों अगर बिफोर टैक्स है कि ये जो डिविडेंड माइनस कितना होया या नहीं कितना याद आऊगा पूरा फॉर्मेट याद करो नॉर्मली ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यस और ਉੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਬਚਦਾ ਸੀ प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करते से टैक्स की बचता से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर दैट यू पे डिविडेंड्स तो डिविडेंड्स का टैक्स तो भी बाद माइनस कर रही है सुनो तो अगर नाउ द क्वेश्चन सेट इट्स प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स तो बिफोर टैक्स तो है ना तो डिविडेंड तो हले चो माइनस होए ही नहीं टैक्स भी माइनस नहीं होया डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुई बिकॉज डेप्रिसिएशन उन्होंने स्पेसिफाई किया दैट्स व्हाई तो इट इज बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स बिफोर डिविडेंड तो अगर डिविडेंड माइनस किया ही नहीं था वापस प्लस नहीं करोगे टैक्स माइनस किया ही नहीं था वापस प्लस नहीं करोगे इंटरेस्ट माइनस किया ही नहीं था वापस प्लस नहीं करोगे मींस नॉर्मली वी से जो प्रोवाइडेड चीज है टैक्स डेप्रिसिएशन डिविडेंड सब कुछ ऐड कर दे डिविडेंड आज ऐड करना नहीं करना टैक्स ऐड करना नहीं करना ठीक है मेनली टैक्स वाला पॉइंट तो चलो गिवन में नहीं है टैक्स गिवन है ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ऑल उदा तो कोई पॉइंट नहीं है ਉਹਦੀ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिविडेंड गलती ना ऊपर भी ऐड ना करते हो so as it is 2,40,000 यूज होगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी आइटम उस तो बाद सीधा कोई नॉन कैश एंड ऑल डेप्रिसिएशन एंड ऑल नहीं है वो ऑलरेडी एडिट मतलब माइनस किया ही नहीं सी तो सीएसीएल ਦੇ चेंजेस किते इनकम टैक्स माइनस करोगे थे कितना इनकम टैक्स है 1,37,500 तो करके तो अड़को ऑपरेटिंग का आंसर आ गया इन्वेस्टिंग से दसो किया होगा फिक्स्ड एसेट्स का की हो रहा है परचेज इंक्रीज मतलब परचेज तो परचेज हो रही 3,70,000 एज इट इज सिंगल अमाउंट एंड इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो डन फाइनेंसिंग से दसो किया होगा स्टॉक एंड शेयर्स इंक्रीज कर रहे थे चेक करो डिफरेंस किया दोनों का 1,40,000 1,40,000 इतने भी चेक करो कि लिखा sorry no this is not stock and shares this is stock and stores this is a CACL share capital is this one it's 50,000 gap yes or no 50,000 rupees किन्ने वाला शेयर 10 rupees वाला किन्ने वाला शेयर 10 rupees so 5,000 shares of 10 each 50,000 हो गए but you issued it at a premium so you'll receive 5,000 into 10 or 15 15 together so total 75,000 issue of shares at a premium financing activities positive and then dividend paid negative and all the answers are done yes or no small question बस एक दो चीजें डिविडेंड रिलेटेड इंपॉर्टेंट ओके यस or no to wind it up question